cause I'm here for eternity. मार के मुझे कोई जा ही नहीं सकता. I'm here for eternity. I'm here for eternity. So hello, welcome back to another video. After a long time, we are back with a video that might end up hurting some sentiments, sparking some controversies, but nevertheless, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है जो आपने टाइटल में पढ़ा, रफ्तार वर्सेस रॉब्सी and the biting allegations that do rounds in the social media and the hip hop scene. Biting in hip hop is when you copy someone else's work, and hip hop has no respect for it. That's how much originality is valued in hip hop. I know both Robsy and Raftaar really well, and I admire their skills and knowledge for the craft. But in this video, I will talk about biting and why I personally never covered any copying allegation on any artists on this channel. Disclaimer, I have an opinion and I will try to put points backing my claims. However, by no means do I want you to perceive it as an absolute truth. Let's move on. अगर आपको इस controversy के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है तो here's a quick summary. Robsy one fine day posted stories claiming that Karma's flow in the song Google Pay was copied by Eminem's flow in this song called Premonition. थोड़ा ड्रामा हुआ and finally Raftaar one day called Robsy to sort things out. I'm assuming कि उस कॉल को मैटर डिफ्यूज करने के लिए किया गया था, but things did not go as planned because कॉल पे बोली हुई कुछ बातें रॉब्सी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, and since then he has put up multiple stories claiming multiple things like Raftaar is a sellout जो कि टीवी पे ट्वर्क करता है, वो कॉपी करता है गाने हनी सिंह से, उनके लेबल के आर्टिस्ट कॉपी करते हैं. ओवरऑल रफ्तार इज अ बैड ह्यूमन. ये था क्रक्स ऑफ रॉब्सी स्टोरीज. नाउ यहां तक आपकी स्टोरी क्लियर हो गई. तो इस इंसिडेंट में रॉब्सीज अटैक ऑन कलमकार कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन टू फेजेस. वन इज प्री रफ्तार का कॉल एंड सेकेंड इज पोस्ट रफ्तार का कॉल. ये कैटेगराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बताता हूँ क्यों. ये कैटेगराइज मैंने इसलिए किया बिकॉज वॉट एवर हैज़ हैपेंड पोस्ट रफ्तार कॉल is mainly because Robsy feels salty about something जो रफ्तार ने उन्हें कॉल में कहा. समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ. एक बार आपको गुस्सा आ जाए तो यू विल ट्राई एवरीथिंग टू डिग्रेड the opponent even if you did not believe it in the first place. ये हर टाइम हर बीफ में होता है. फॉर एग्जाम्पल रफ्तार क्लेमिंग दैट एमीवे इज रस की कॉपी एंड एमीवे क्लेमिंग दैट उन्होंने रफ्तार को 2014 में ही डिस कर दिया था, जबकि सच्चाई ये थी कि डिस ट्रैक्स निकलने से 6 महीने पहले दोनों एक दूसरे के साथ गाना बनाना चाहते थे और एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध रहे थे. It's the same case here because Robsy and Raftaar had absolutely no issues before that phone call happened, and as soon as the phone call happened, there were multiple allegations targeting Raftaar. But still, let's take a look at a few allegations Robsy put after Raftaar's call. Raftaar twerking on national television. Robsy posted this video of Raftaar twerking with a lot of disgust attached to it. अगर आप मुझसे पूछोगे is it cringe, I would say for sure, and my skin would also crawl. But the problem with cringe is that it is like fashion or humor, extremely subjective. So you can label someone cringe or chhapri for their humor or fashion, but it is not something you can call someone out for. Eminem has dressed as a woman for his music video. Diddy once performed wearing a skirt, जो कि मेरे हिसाब से बहुत cringe हो सकता है, but I cannot call them out for it. Biting allegations. Biting के ऊपर हम विस्तार में, एकदम विस्तार में बात करेंगे जब हम प्री रफ्तार कॉल वाले फेज को डिस्कस कर रहे होंगे. But a few allegations by Robsy, like नाचने का शौक being copied from Man's Not Hot, was a loser because from the day one all the listeners know that Naachne Ka Shauk was actually a dig on tracks like Man's Not Hot, and that's why at a few places even the flow is intentionally kept the same to make it obvious. The thing goes skitty keep pop and the poop the thing goes मैं रैप करूं खा जो रैपर है वैक उन्हें सुनते हो आप. Rappers replicate the flow all the time, either to give tribute or to mock. आपने ये mock वाला एग्जाम्पल नाचने का शौक और Man's Not Hot में देखा. Here's an example of a tribute. I'm the R, the A to the K I am. The most popular demanded rap classic. If I wasn't, then why would I say I am? And I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? I'm important like the Pope. I'm the king of New York. I'm live from South Central. I'm a Muslim on pork. I'm important like the Pope. I'm a Muslim on poke. I'm Machiavelli's offspring. I'm the king of New York. तो पोस्ट रफ्तार कॉल वाला जो फेज है उससे हम इतनी चीज डिस्कस करेंगे बिकॉज रियल डिबेट लाइज इन द प्री रफ्तार कॉल स्टोरीज बाय रॉब्सी, जिसमें वो कर्मा के फ्लो को कॉपीड बता रहे हैं बाय प्रेमोनिशंस फ्लो, जो कि एमिनेम का एक गाना है. I think the analysis that comes up would start an interesting debate, and I would like to put forth my controversial opinion on the same.
तो उसके लिए ध्यान से सुनना और वीडियो एंड तक देखना बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट. फॉर नाउ लेट्स लिसन टू कर्मा एंड एमिनेम का फ्लो वंस अगेन. रॉब्सीज क्लेम इज दैट बीट, flow, Eminem's look, and even few of the things that Karma said, everything was copied. It can happen to shady, they do the same shit to Brady. More people hate me than love me, this game will make you go crazy. They call us legend, जब करते rap हमने lesson. आजकल के rappers हैं lesson and they be lacking in passion. ना सुन के तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगा एंड दैट्स वाई यू वुड सी कर्मा के बहुत ज़्यादा हार्डकोर फैंस डिफेंडिंग इट बाय सेइंग कि अरे ये तो इंस्पिरेशन लिया है एंड दीज वर शाउट आउट्स टू एमिनेम. But we are going to dive a little deeper. Now, a rap song is broadly made up of 3 parts. Broadly बता रहा हूँ. सबसे पहले आती है beats, उसके ऊपर आते हैं vocals and finally music video. आज के लिए music video को साइड करते हैं तो हमारे पास बची beats और vocals. आगे की वीडियो इसी पर बेस्ड होने वाली है. तो अगर हम बीट्स को ले तो बीट्स को भी ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है. आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है अभी और भी ज्यादा होगा तो स्टे विथ मी. बीट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ड्रम पैटर्न्स एंड मेलोडी. मेलोडी विल इंक्लूड सैम्पल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, रिदम, व्हाटएवर एटसेट्रा एटसेट्रा. अभी सिर्फ ब्रॉडली डिवाइड कर रहे हैं. नाउ 95% ऑफ द ट्रैक्स इन हिप हॉप आर मेड विथ 4/4 टाइम सिग्नेचर्स. एक ताल होती है 1 2 3 4. इसको 4/4 टाइम सिग्नेचर्स का नाम दिया जाता है. And there are only finite number of drum patterns to choose from. And that is why in the history of music, you can copyright your melody, rhythm, even lyrics, but drum patterns cannot be copyrighted. And that's why you would see a lot of rap song having a similar drum pattern, even if it's at a different tempo. Now, अब अगर बात करें samples की, तो that doesn't qualify as plagiarism, obviously, but बहुत सारे लोगों को अभी भी इसके बारे में जानकारी नहीं है. Most popular example of using a sample in Desi hip hop has to be this song by M.A. Bantai called मचाएंगे. उसमें कश्मीर के एक सैम्पल पैक का सैम्पल यूज किया गया था and here's how it sounds. What is up? What is up? क्या बोल रहे सब लोग? Lastly, the overall melody and rhythm of the beat. I think this is the most important factor that helps us determine if a beat is plagiarized or not. If a beat of a song has same melody and rhythm along with a similar drum pattern, in my opinion, it comes very close of being called a copy. Very close. इस पे ध्यान देना. अभी भी मैंने copy नहीं बोला है, very close बोला है. क्यों? उसका रीजन मैं आपको एंड में बताऊंगा. बट नाउ कमिंग बैक टू कर्मा एंड एमिनेम का कंपैरिजन, द ड्रम पैटर्न इज एक्सट्रीमली सिमिलर. द टेम्पो ऑफ बोथ द ट्रैक्स इज ऑलमोस्ट सेम. The main instrument used in the melody is also pretty similar, but the melody itself is slightly different. बहुत ज़्यादा different भी नहीं बोलूँगा. I won't be surprised if premonition was actually an inspiration behind this track and if premonition was used as a reference for this beat. But having said that, the premonition beat has a female vocal sample and also a few variation as the song progresses. I'm LL Cool J, bigger and deafer, that's how come. Was it copied? I will answer all of that towards the end. Stay tuned. अब हम थोड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट पे पहुंच चुके हैं. नेक्स्ट कम्स द एलिगेशन ऑफ बाइटिंग फ्लोज एंड ऑनेस्टली फॉर मी इट इज द टफेस्ट वन टू प्रूव और डिसप्रूव. तो ऐसे में हम मदद लेंगे एनालिसिस की, क्योंकि कभी कभार हमारे कान धोखा दे जाते हैं बट एनालिसिस कभी भी धोखा नहीं देती. सो हियर मी आउट नाउ. अगर आप रैप वोकल्स में से लिरिक्स एक्सक्लूड कर दें तो हमारे पास सिर्फ फ्लो और केडेंस बचा हुआ है. तो ऐसे रैप वोकल्स को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज केडेंस, कि भाई बार की डिलीवरी किस पिच पे की गई है, कौन से वर्ड को हायर पिच पे बोला गया है, कौन से वर्ड को लोअर पिच पे बोला गया है, कौन से वर्ड पे स्ट्रेस दिया गया है, कितना चॉपी है वो फ्लो, कितना स्मूथ है वो फ्लो, एटसेट्रा. नंबर सेकंड इज नेचर ऑफ राइम, कितने सिलेबल राइमिंग हो रही है उस बार में. नंबर 3 है साउंड ऑफ राइम, कि भाई वहां पे कौन सा वर्ड, कौन सा वोवल, कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड की राइमिंग चल रही है उस बार में. एंड फाइनली नंबर 4 है राइम प्लेसमेंट, कि एक बार में 4 बीट्स होते हैं, कौन सी बीट पे राइम इज हैपनिंग. तो इससे हमारे पास फ्लो को डिफाइन करने के लिए 4 कैटेगरीज आ गई. ना हमारे पास 4 क्राइटेरियाज आ गए हैं एंड हम इन 4 क्राइटेरियाज में एलिजिडली कॉपीड सेगमेंट को प्रेमोनिशन से कंपेयर करके देखेंगे. अगर हमें लगा कि कर्मा का गूगल पे एक पैरामीटर के हिसाब से प्रेमोनिशन से मेल खाता है, फॉर एग्जांपल उसका केडेंस एकदम प्रेमोनिशन से सेम है, तो हम गूगल पे के फ्लो को देंगे 1 कॉपिंग पॉइंट्स और वैसे वैसे करके हम उसको 4 पैरामीटर्स में बांटेंगे. अगर स्कोर आया 4 तो इट्स अ डेफिनेट कॉपी, अगर स्कोर आया 1 तो इट इज नॉट
a copy. अगर बात करें cadence की, आप एक और बार ये पार्ट सुनिए. It can happen, the shady, they do the same shit to Brady. More people hate me than love me, this game will make you go crazy. They call us legend, legend जब करते rap हमने lesson. आजकल के rappers हैं lesson and they be lacking in passion. Definitely cadence is very very similar and that's why even layman feels कि ये copy है. जो शेडी ब्रेडी और क्रेजी राइम करते वक्त हल्का सा स्ट्रेस और हायर नोट आता है, वो कर्मा के लेजेंड, लेसन और लसुन के राइम स्कीम में भी दिखाई देता है. However, Eminem's delivery is smooth, whereas Karma went for a choppy delivery style. Cadence is definitely the same, one copying point to this bar. For the next three categories, जो कि एक flow determine करती है, we are bringing back what we started in the सीधे मौत video. The flow chart. On your screens, you can see two bars from premonition. Each bar is separated into 4 beats for obvious reasons. And हर beat के अंदर कितने syllables हैं और क्या rhyme हो रहा है वो हमने denote कर दिया है. As you can see, it is a pretty tight rhyme scheme, but for now, we'll just focus on the 3-syllable rhyme scheme. Too shady, pill hate me, go crazy. Basically, the purple, blue, and red scheme appears about 4 to 5 times in these two bars. Now let's put Karma's bar in our flow chart. Karma also has a predominant 3-syllable rhyme that occurs about 3 to 4 times in the two bars. Very similar, so we can say the nature of rhyme, 3-syllable rhyme की मैं बात कर रहा हूँ, here is also similar in both the tracks. So right now the copying score is 2 out of 2. Now if we look at the criteria number 3, the sound of the rhyme is very different. Too shady and legend jab बहुत अलग हैं. They are definitely miles apart. So this criteria doesn't fit in. Right now the copying score is 2 out of 3. The last criteria is rhyme placement. आप देख सकते हैं Karma has rhymed the word legend in second and fourth beat in both the bars. Now fourth beat पे जो rhyme हो रही है उसको हम ignore करेंगे because वो तो almost हर गाने में ही होती है, because हर गाने में generally rhymes fourth beat पे आती है. In both the bars, Karma's rhymes are placed in the second beat. So Karma's rhyme placement is 2 and 2. Whereas, again ignoring the fourth beat rhyme in Eminem's scheme, Eminem is rhyming on the second beat in the first bar and the first beat in the second bar. तो at least एक चीज common है, तो यहाँ पे हम 0.5 copying marks दे देते हैं कर्मा के फ्लो को. तो the final copying score of Karma's Google Pay as compared to Eminem's Premonition हुआ 2.5 out of 4. Time for a controversial opinion. 90% of the time when you think a flow is copied from another, it generally isn't. जैसे हमने यहाँ पे देखा, कर्मा और प्रेमोनिशन का फ्लो साउंडेड वेरी सेम, बट जब हमने उसको पैरामीटर्स में बिठाया तो स्कोर वॉज 2.5 आउट ऑफ 4. एंड अकॉर्डिंग टू मी, यू कैन नॉट कॉल अ फ्लो कॉपीड जब तक स्कोर एटलीस्ट 3.5 तक ना पहुंच जाए. यकीन नहीं होता? गिव मी अ मिनट, आई विल प्रूव इट टू यू. ट्रिपल थ्रेट is Robsey's latest non-diss track. And listen to this section from the song. Fuck a fake रिश्तेदार मैं समझदार तेरे सिर पे दौलत का है भूत सवार मैं फरार. कैसा लगा आपको? सही लगा? मैं फिर से आपको प्ले करके दिखाऊंगा. अगली बार जब मैं प्ले करूंगा, जैसे ही ये सेक्शन खत्म होगा, ड्रिलबाजी का एक और सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा. ड्रिलबाजी एक गाना है रेवल 7 का, एंड जैसे ही ड्रिलबाजी के 2 बार खत्म होंगे, इल्जाम नामा के गाना है, उसमें तलहा यूनिस के 2 बार्स मैं लगा दूं. Fuck a fake रिश्तेदार मैं समझदार तेरे सिर पे दौलत का है भूत सवार मैं फरार. मेरी बात बवाल है, कान पे कान है, ये तो सारे शेर की खाल है, भेड़ की चाल है, सीधा काटे देख के माल है, नेक खयाल. पैसा तो आपकी मैल है, बात तो फैले, माना कि हम जाहिल थे पर कभी भी ये हाथ नहीं फैले. Now you have heard all the 3 flows. क्या आपको इन फ्लो में सिमिलैरिटी नजर नहीं आई? Of course नजर आई होगी, because फ्लो का केडेंस बहुत सिमिलर था, फ्लो के राइम स्कीम्स बहुत सिमिलर थे. I have done my calculations and you can do that for yourself too, and you will find out कि इसमें भी कॉपिंग स्कोर का रेंज is between 2 to 2.5. Same score as Karma's Google Pay when put against Premonition. कहने का मतलब ये है कि 2 से 2.5 रेंज वाले जो कॉपिंग स्कोर है, ऐसे बार्स को कॉपी, प्लेजरिज्म और बाइटिंग कहना वुड बी वेरी अनफेयर, बिकॉज हर आर्टिस्ट के ऐसे बार्स निकाले जा सकते हैं. आई विल मेक दिस क्लेम इन अ वेरी बोल्ड वे कि कोई भी आर्टिस्ट जिसने एटलीस्ट 20-30 गाने निकाले हैं विल डेफिनेटली हैव अ बार दैट साउंड सिमिलर टू अनदर बार रिटन बाय अनदर आर्टिस्ट. नाउ डू आई थिंक कि रॉब्सी ने वो फ्लो कॉपी किया है? ऑफ कोर्स नॉट. आई एम प्रिटी श्योर रॉब्सी ने शायद बाकी 2 गाने ठीक से सुने भी ना हो. बट द पॉइंट हियर वंस अगेन इज that there are only finite amount of सुर, ताल and their permutation and combination. और रैप में तो सुर भी उतना ज़्यादा नहीं होता, तो there are bound to be similarities in flows. अच्छा अभी जाना मत, ये conclusion नहीं था, conclusion इसके बाद आएगा, बट अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है. We spoke about the flow
But if you look at Karma's Google Pay, you will see that it has more similarities to premonition than just flow. Flow is similar, no doubt. 2.5 score is pretty decent. The things that were being said in the song were similar. जैसे रॉब्सी ने point out किया, starting में जो बातें की जा रही थी were very similar to the intro bars of Eminem's Premonition. They said my last album I sounded bitter. No, I sound like a spitter. Who 90% of these hypocrites are trying to get rid of. कुछ बोले MYP थी basic, कुछ बोले थी वो amazing. Basically, let's face it, लोग नहीं चाहते that we make it. Tempo of the song was very similar. The structure of the beat definitely similar. In fact, a few elements, irrelevant elements like spelling out a word in the bar was common in both the songs. Crazy, about to go for B-O-O-K-E. I was the still ये kid, RMS से tip it, dare. And a lot of Karma fans will come and say कि अरे ये तो Eminem को tribute दिया गया है. And I personally do not agree with the reasons कि Eminem को tribute देने के लिए flow replicate किया गया जैसे रफ्तार ने सजाए मौत में किया था. Because if you're planning to give tribute or if you're trying to mock that artist by replicating their flow, you have to make it a little more blatantly similar to a popular Eminem flow. So the bottom line is, if you want to call it a copy, you can. However, I generally refrain from doing that. And before you tell me, अबे तू तो वैसे भी कलमकार के artist को call out नहीं करेगा, listen to this first. Why I gotta do something like that? What can I do? Yo, Now here's a decision that you all have to make because I'm pretty sure यहाँ पे जितनी भी जनता आती है वो किसी न किसी टीम में बट रखी है. If you decide to call out Karma, make sure you call out Emiwe Bantai as well. And similarly, if you called out Emiwe Bantai when What Can I Do dropped and ये controversy हुई थी, it's only fair that you also label Google Pay as a copied song. Otherwise, you're just being absolutely hypocritical. But if you're in Insta page जिसकी DP में Emiwe रफ्तार की फोटो लगी है और आप दूसरों को biased बोलते हो, then you have a license to be a hypocrite. You can do that. Now let me tell you why I don't make videos or post stories about anyone plagiarizing. There are two reasons. Number one, two people can think alike. जैसे मैंने बताया बहुत बार unintentionally people think of similar things. For example, Krishna wrote मैं serial killer to cornflakes in 2019 and Eminem wrote a bar I serial kill you are Kellogg's in 2021. Apart from that, if you remember my joke on lack of taste and its comparison to COVID symptoms जो मैंने अपने देसी हिप हॉप रोस्ट के दौरान यूज किया था, a very similar reference is used in a JID song called Scatterbrain. Okay, change in quality, but ऐसे ही कुछ बीट प्रोड्यूसर कर्तव्य के साथ भी हुआ था जब उनकी मोक्ष की बीट को कॉपी कहा गया था from a beat that was already present on YouTube. And later investigation के बाद पता चला था that this was a pure case of two people thinking alike. पोसंपा भाई पोसंपा कलमकार में क्या हुआ And same thing can happen with a flow where two different people think of a similar flow. Reason number two is subliminal influence. ये तो बहुत लोगों के साथ हुआ होगा कि आपने अपने दोस्त को एक जाके जोक सुनाया जो आपको लगता है आपका ओरिजिनल जोक है और वो सामने से बोलता है कि अरे ये जोक तो मैंने ही तुझे भेजा था. But your brain is kind of sure that you thought of that joke. Similarly, it is possible that you hear a song and maybe your conscious brain forgets about its existence. But when you go to the writing table, your subconscious mind gives the same flow to you and you think of it as an original and a fresh flow. And point number two is my guess why Karma's Google Pay and Emiwe's What Can I Do landed up in plagiarism debate. And finally, both Karma and Emiwe in this situation are serious artists, है ना, मजाक तो नहीं कर रहे हैं वो. And biting is a pretty huge allegation. So until it's 100% proven, I personally give them the benefit of the doubt कि भाई वो लोग सिंसियर आर्टिस्ट है और इतना ब्लेटेंटली कॉपी करने का रिस्क वो नहीं लेना चाहेंगे. तो अब सवाल उठता है कि भाई इसका मतलब ये है कि मेरे पैरामीटर्स के हिसाब से तो कोई भी कॉपी नहीं कर रहा. अब ऐसा भी नहीं है. अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू आर मेकिंग सच एलिगेशंस, इट शुड बी अ लॉट मोर कॉन्क्रीट देन जस्ट 4 bars हैविंग द सेम केडेंस और साउंडिंग सिमिलर. तो जैसे मैंने बताया, ऐसा कोई भी आर्टिस्ट नहीं है जिसके 4 bars को इंडिपेंडेंटली उठा के उसको प्लेजराइज घोषित ना किया जा सके इफ आर बार्स फॉर पुटिंग एलिगेशंस आर सो लो. बट दैट इज जस्ट मी. अगर आप बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाहते तो आप कर्मा, एमिवे दोनों पे प्लेजरिज्म का आरोप लगा सकते हो एंड देयर विल बी नथिंग रॉन्ग इन इट, एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग इन इट. फॉर मी, इफ आई हैव टू कॉल समथिंग copied, first of all, it should be a larger chunk of work.
not just 4 or 8 bars. Or it should be someone who does it quite often. We all know ऐसे कुछ artists हैं industry में जिनका plagiarism में कोई competition नहीं. And if ever I see an artist like that, him and I shall have a chat about biting. So that is it for the video. I tried to make this video as comprehensive as possible ताकि आगे किसी भी आर्टिस्ट पे जब plagiarism और biting के allegations लगे तो मेरे को फिर से नई वीडियो ना बनानी पड़े. If you have any valid counters, drop them in the comments below and I might make a video addressing that too. Only if it makes sense in my head and if I have not answered it in this video. Subscribe to my channel and like or dislike this video. You can follow me on Instagram. My Insta handle is @ROHANCRIAPPA. Also follow my second channel, Not Funny Rohan. Until next time, it's me Rohan Karepa signing off. I don't show love to show the world. If I fuck with somebody, I make sure they know it personally.